body undergoes the distance delta x by conservative force, then as per our work energy theorem, what we can say? We can say about the W is equal to delta K is equal to Fx into delta x. Okay. Now over here एक बात आती है कंजर्वेटिव फोर्स. सो कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियो में उसकी डेफिनेशन हमने देख ली थी. ओके. सो इधर बात किसकी हो रही है? बॉडी विच इज अंडरगोज और डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं, अदरवाइज डिस्टेंस डेल्टा x की बात की है, which is having something conservative force. Then according to our work energy theorem, what we can say? Work is equal to, हमने इक्वेशंस डिराइव किया था, W is equal to delta K and as well as we can say as a work is equal to क्या है? Force multiplication of displacement. ठीक है. सो ये दोनों इक्वेशंस का कंबाइन करके इधर हमने लिखा हुआ है. सो W is equal to delta K Fx into delta x. ठीक है. सो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा. चलो. Now as we know that, as we discussed in the previous video में हमने एक इक्वेशंस डिराइव किया था, the conservative force, that means F is equal to negative sign of delta V divided by delta x. ठीक है. So using this one हम इक्वेशन एक सपोज लिखना चाहते हैं, कैसे लिख सकते हैं कि Fx into delta x is equal to minus delta V. Okay, and which is our equation number 2. ठीक है. So what we have to do using the equation number 1 and 2, इधर हम लिख देते हैं from equation 1 and equation number 2. हम क्या लिख सकते हैं? देखो यहाँ पे Fx into delta x है and यहाँ पे भी क्या है? Fx into delta x है. तो that means what, हमें equation number 1 and equation number 2 का यूज करके हम क्या लिख सकते हैं? We can say as a delta k is equal to minus delta v. ठीक है. सो ये इक्वेशन में अल्टीमेटली हमें क्या किया हुआ है? कंपेयर किया हुआ है. कंपेयर करेंगे तो क्या जाएगा? डेल्टा k इज इक्वल टू माइनस डेल्टा v. ओके. सो वो हमने इधर लिखा हुआ है. ओके. नाउ ये डेल्टा v है, नेगेटिव है, इसको इज इक्वल टू के दूसरे पास ले जाए तो क्या जाएगा? डेल्टा k माइनस करके हो जाएगा प्लस डेल्टा v इज इक्वल टू 0. ओके. नाउ यहाँ पे क्या बात हो रही है? डेल्टा कॉमन ले लो, इनसाइड द ब्रैकेट k plus v is equal to 0. So what we can say over here, the change in kinetic energy. किसकी बात हो रही है? So using these equations, what we can say, the change in kinetic energy and the potential energy is 0. Okay. So that means ये equations लिखा हुआ है, delta which is known as considered as a what? Change in some quantity, and कौन सी quantity है? यहाँ पे k है and v है. k that means what? Kinetic energy, and v that means what? Potential energy, which is equal to 0. That means what we can say, the sum of kinetic energy and potential energy is constant. Okay. So हम इक्वेशन लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? काइनेटिक एनर्जी को k से डिफाइन किया, पोटेंशियल एनर्जी को हमने v से डिफाइन किया, which is equal to, हमने क्या बताया हुआ है? कांस्टेंट. सो कांस्टेंट हम लिख सकते हैं. दैट मींस ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा k plus v is equal to कांस्टेंट. ठीक है. चलो. नाउ for the whole path, initial as well as the final condition आएगी. So we are assuming that for whole path we are considering that xi to xm. Okay. I that means initial and f that means final. Okay. So using this one, k plus v is equal to constant हमने लिखा है. So because of that reasons we can say about the initial for the initial condition as well as the final condition. So ki plus v xi, that means what? Initial kinetic energy plus initial potential energy, which is equal to the final kinetic energy plus final potential energy. Okay. So k plus v of x is called as a total mechanical energy of the system. Okay. So k that means what? Kinetic energy, and v of x that means what? Potential energy. Also we have to remember that the potential energy and kinetic energy may vary from point to point. That means what? ये point पे कुछ value vary हो रही है potential energy, दूसरे point पे भी change हो रहा है, that means vary हो रही है value. But the sum remains constant. Okay, point to point value vary रहती है, but the sum हम finalize करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? वो constant रहेगा.
have to remember. So now what we can say, the total mechanical energy of a system is conserved. क्या conserved if the force doing work on it which are the conservative. force कौन सा होना चाहिए which are the conservative. The total mechanical energy of the system is conserved. ओके, यहाँ पे बात हो रही है कंजर्वेटिव फोर्स की. सपोज हम ऐसा एज्यूम कर लें कि हमारा फोर्स नॉन कंजर्वेटिव होगा, तब मैकेनिकल एनर्जी का क्या होगा, कौन सा इक्वेशंस होगा. सो यहाँ पे कंजर्वेटिव है. अभी हम इक्वेशंस लिखना चाहते हैं फॉर द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स. फॉर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में बात करते हैं, तब हम क्या लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट समथिंग पॉइंट v of x हम लिख सकते हैं, प्लस इधर लिख सकते हैं हम q is equal to constant. दैट मींस व्हाट, k तो हमें पता ही है काइनेटिक एनर्जी है, v दैट मींस पोटेंशियल एनर्जी, q यहाँ पे आ रहा है एंड q which is known as a what, heat deficient, that means loss हो रहा है and because of the friction. Okay, so which is considered as a constant. That means what, conservative force होगा तो kinetic energy plus potential energy that will be is equal to constant. And if the force which are the non conservative होगा तब हमारा इक्वेशंस में क्या आ जाएगा, q आ जाएगा. q which is considered as a what, heat deficient, or we can say that heat deficient होगा because of which reason, because of the frictions, and that will be is equal to the constant. Okay, now we have to discuss the 3 points about the conservative force. So now 3 point की बात करनी है यहाँ पे हमें. A force f of x is conservative if it can be derived from v of x by the relation v of delta v is equal to minus fx into delta x. Okay. Second point, the work done by conservative force depends only on the end points. That means what, as we know that w is equal to, क्या हम लिख सकते हैं, w is equal to delta k is equal to minus delta v. So हम इक्वेशंस लिखे सिंपल फॉर्म में, तो क्या w is equal to delta k, that means फाइनल माइनस इनिशियल. चलो, एंड यहाँ पे क्या बात है, यहाँ माइनस है बिकॉज ऑफ डायरेक्शंस, पहले क्या जाएगा, इनिशियल माइनस फाइनल. दूसरी तरह से भी हम इधर लिखे तो माइनस ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे v of xf फाइनल माइनस v of xi. सो माइनस इधर जाएगा तो पहले कौन सा प्लस वाला टर्म लिख लिया हमने, सो v of xi माइनस v of xf. ओके, सो ये हो जाएगा. चलो, एंड थर्ड पॉइंट कौन सा है, वर्क डन बाय फोर्स. क्या वर्क डन बाय दिस फोर्स इन अ क्लोज पाथ इज 0. क्यों 0 हो रहा है, सपोज हम ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि ये सपोज हमारा कोई क्लोज पाथ है. सो फॉर द क्लोज पाथ इनिशियल पोजीशन is equal to the final position, तब हमारा जो वर्क डन होगा that will be is equal to the 0. So यहाँ पे हमने लिखा है for the closed path xi is equal to xf. Okay, so ये हमें 3 पॉइंट हमें रिमेंबर रखना.